Hello friends. So today starting with our next session of periodic classification. Now in periodic classification we have studied lots of different topics, and today we are coming to the end of our second lesson, that is the classification of elements with the metallic and non-metallic character. Before that we will revise few things. In last session we have learned about the valency and the atomic size. So in the valency, how the electrons are shared, on that basis, or you can say the gain or lose of electron, that decides the valency, and from that basis how the elements are arranged in the periodic table that we have seen. Now here one more example I am going to show about the valency and the valence, or you can say the shared pair of electrons. So here I have taken one, last time we have taken the example of sodium and chlorine. Now here one example I have taken carbon and hydrogen. So here carbon in outermost shell there are 4 electrons, and in hydrogen in outermost shell 1 electron. So hydrogen का स्टेबल होने के लिए वी रिक्वायर्ड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ड्यूप्लेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए. बट इन कार्बन दिस इज द टेट्रावैलेंट एंड वी रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो इन दिस वे द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हैविंग द chemical reaction, with that they will share the electrons. So here you will see carbon with this 1 electron and the hydrogen, they both will combine here. In the similar way, each electron of carbon, the 4 electrons share with 4 hydrogen atoms, because hydrogen required 1 and carbon required 4. So these 4 hydrogen they combine with the carbon, and then this is the shared pair of electron. इस तरह से ये shared pair of electron होकर बन जाता है, that is the CH4, that is the methane, and the carbon also becomes stable and hydrogen also becomes stable because their shell is complete. So जिस तरह से shell complete होता है outermost shell, तो ये outermost shell जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन टेक करते हैं, गेन करते हैं, that time the outermost shell that removes, before that जो शेल होता है वो अपने आप ही पूरा होता है, that is the penultimate shell we call it as. तो अंदर वाला जो शेल होता है that is the penultimate shell, and the outermost shell is nothing but that is the valence shell. So in this way the electrons, or you can say the atoms are shared. Now here we will see with the help of atomic size. So we have learned about the atomic size from the center of the nucleus till the last valence shell तक जितना बीच में, this is the radius, that is nothing but the atomic size. And atomic size, how it decreases and increases from left to right and top to bottom, we have learned. So here one more pictorial presentation I am going to show you. Here you will see how one period is taken from lithium till here you will see Fr. Now here sodium, potassium. In this way how the number of electrons are increasing. Shell नहीं increase हो रहे हैं. From left to right you will see the number of electrons are increasing, and when the number of electrons are increasing, the protons, the positive charge which is present in the nucleus, that positive charge is also increasing, and that positive charge attracts the electron toward itself. And that's why what happened कि जो outermost shell है जिसमें electrons बढ़ रहे हैं वो अपने आप अंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं. और यहाँ आप देखोगे कि किस तरह से ये गैप फिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, and because of that the atomic radius decreases. Now here you will see from top to bottom. So from top to bottom what happened, the number of shells are increasing. Atomic number तो increase हो ही रहे हैं, along with that the number of shells are increasing, and when the number of shell is increasing, the distance between the nucleus and outermost shell
न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल यू विल से इट विल इंक्रीज. सो जो डिस्टेंस इंक्रीज होता है, सो आउटर मोस्ट शेल दैट गोज अवे, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड, वो चार्ज में अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, एंड इन दिस वे द एटॉमिक साइज increases from top to bottom. This what we have learned. This is what the pictorial presentation, you will see how the atomic size increases and decreases from left to right and from top to bottom. देखो यहाँ पर कैसे ये increase हो रहा है और यहाँ से कैसे ये decrease हो रहा है. Each period and each group you will see how it is increasing and decreasing. So this is what we have learned in the last session. Now moving ahead with the next part, that is the metallic and non-metallic character. अब ये metallic and non-metallic character किस तरह से relate होता है periodic table में? So I think if you remember in the previous session I have told you about the metals and non-metals. Metals, we know the characteristics of physical chemical properties of that. It is a malleable, it is ductile, good conductor of heat and electricity, lustrous, sonorous, melting point, boiling point, ये सारी चीजें होती है metallic characters, and keeping in mind these all characters the periodic table is carried forward. अब यहाँ पर page number 26 they have given few questions. Look at the elements of the third period, classify them into metals and non-metals. So already we have learned that how the metals and non-metals are classified. Now with the help of this periodic table you will see that now in this periodic table here the zigzag line is there, already I have shown you before. So before zigzag line, here at the left side you will see all are the metals. Now after zigzag line here there is the non-metals, and exactly on the zigzag line there is the metalloid. These characteristics already we have seen. So depending on this particular characters, how the metals, non-metals and metalloids are arranged in the periodic table, that also shows the metallic and non-metallic character. अब ये कैसे होता है? So see, on the zigzag line it is having the tendency to lose or gain the electrons. So I will show you how. Now see, here I have taken the same example again, that is the sodium. Its electronic configuration is 281. Chlorine electronic configuration is 287. So now here these two elements they are having the combination or chemical reaction किस तरह से? So the sodium is having outermost shell 1 electron, valence electron, और chlorine के outermost shell में valence electron होते हैं 7. So here the valency decides, that is the 1, because I already told you कि valency किस तरह से होती है. If you take that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the suppose electrons present in the outermost shell. क्योंकि हमें stable होने के लिए at least 8 electron की जरूरत होती है outermost shell में, तो that's why I have taken here. So now here if it is the 1, so 1 electron easily we can give. So its valency is 1. Now 2, so in 8 electrons, from that the minimum electrons that easily we can give. ज्यादा electrons हमें देने की जरूरत नहीं, जो छोटे हैं वो हम ले सकते हैं और दे सकते हैं. So this is the valence is 2. Here the valence is 3. Here the valence is 4. Now 5. 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. सो इन दिस वे हियर नाउ वी आर नॉट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, नाउ हियर वी आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर हम 3 electrons ले रहे हैं, that is we are taking. Now 6, instead of giving 6 electrons we will take minimum वाला, so to complete the octet. So here we are taking 2 electrons, here we are taking 1 and here 0. So in this way the metallic and non-metallic character, in that way the cations and anions formation होता है. और ये cations और anions, it is nothing but the positive charge and negative charge, how they give and take on that basis. So here you will see the valency 1, 2, 3 and the 4. 4 is the part that share how it will take also and it will give also. So in this way 1, 2, 3 electrons we are giving. So when the electrons are given it becomes the cation और वो बन जाता है positive charge. How? See, so sodium it is having the
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 वैलेंसी 1, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज कम हो गया, तो वहां पर रह जाता है ज्यादा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाउ सोडियम विल बिकम द पॉजिटिव चार्ज आयन। अब ये एलिमेंट आयन बन जाता है while giving or donating the electron, so while losing the electron, so 2 or 8, in this way this become the stable, 2 and the outermost 8 यानी octet complete हो गया, so now sodium become the cation, in this way the cation formation is there and the positive charge is there, इस तरह से positive charge यहाँ पर ज्यादा है, positive charge formation हो गया, because we know sodium is having the 11 एटॉमिक नंबर, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो 10 रह गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। नाउ क्लोरीन, क्लोरीन दैट इज द 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स, इक्वल चार्ज है। अब यहाँ पर 2 8 7, 7 मीन्स 1 इज द वैलेंसी 1 मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, so now chlorine will take 1 electron, so 1 electron is taken, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन तो उतने ही है बट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो क्लोरीन बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हो गया क्लोरीन माइनस एंड इट बिकम्स द एनायन, अब ये क्लोरीन हो गया है आयन, दैट इज एनायन, एंड द शेल 2 8 8, in this way chlorine and sodium become stable in the you can say nature, इस तरह से ये दोनों स्टेबल हो गए and we get the sodium chloride, sodium positive charge and chlorine negative charge। Similarly here 5 6 7 8, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं और देते हैं, on that basis this particular metallic character also decides, and here with that basis the electropositivity and electronegativity difference। अब ये electropositivity और electronegativity किस तरह से होती है, you will see when it is going from left to right, left से right की तरफ आप जब जाओगे, in that way the atomic size decreases, atomic size decreases, so naturally the electropositive characters, that is the increasing electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि किस तरह से, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सारे मेटल्स है लाइट ब्लू, ये डार्क में है सारे नॉन मेटल्स, तो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट टाइम द मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज टुवर्ड्स द नॉन मेटेलिक, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दिस इज हाउ द मेटेलिक कैरेक्टर्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शोज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, सो दिस इज व्हाट द मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द top to bottom, so from top to bottom we know that here you will see how the metallic characters and the atomic size increasing। अब यहाँ पर टॉप से बॉटम आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज अपने आप इंक्रीज होता है, जब ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ड्यूरिंग दैट सिचुएशन यू विल सी the electronegativity is decreasing and electropositivity is increasing। जो left to right होगा उसी के बिल्कुल opposite top to bottom होता है। Not only this, the non-metallic character is also decreasing and metallic character is increasing। In this way, the metallic and non-metallic characters are given। Here from the textbook you will see the clear picture is given। From this clear picture from the textbook you will see how this particular, these are the metals, these are the metalloids, zigzag line on the zigzag line metalloids है, और यहाँ पर होते हैं non metals। So in this way metals, non metals and metalloids are specified, and this shows how the metallic character increases and decreases, electropositivity increases and decreases। Along with that you will see how the increasing electronegativity and metallic character। So this is what the simple structure of metals and non-metals। With that, few things we will see with the help of reading only in this topic। Now the periodic train, in that we have seen how the
elements or how the substance they move from top to bottom or left to right, and depending on the valence electron characteristics or you can say the positivity negativity, ये सारी चीजें किस तरह से एक ट्रेंड बनाती है पीरियोडिक टेबल में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल. So it is clearly given here, that is the two factors, namely increasing nuclear charge and decreasing atomic radius. So when you are going from left to right, तो यहाँ पर nuclear charge increase हो जाता है because in nucleus protons are there. So proton is increasing क्योंकि number of you can say atomic number is increasing, the number of proton increasing, number of proton increase हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो इंक्रीज होता है. वो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. ठीक है, इन दिस वे इट इज शोन नाउ clearly. Now here as a result, the tendency of atom to lose valence electron decrease with the period from left to right. Now moving ahead, the valence electron are held with greater attractive force. This is called the electronegativity of an atom. Now due to increasing electronegativity from left to right within the period, the ability of atom becoming anion by accepting the outermost electron that goes on increasing. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होकर एनायन और कैटायन की कैपेसिटी वो बनती है. So the tendency of an element to form anion or the electronegativity is non-metallic character of the element. So this is how you have to keep in mind how the things are arranged according to the valency, atomic size and metallic and non-metallic character. Now with the help of that, there is the last topic given, gradation in the halogen family. So halogen family, it is nothing but the last 17th group है. In that 17th group you will see that they all are diatomic. Last time I have told you कि that is hydrogen, how it shows the property H2, oxygen O2. इसी तरह से chlorine, bromine, fluorine, ये जो सारे elements है that is a halogen. I have told you hal, salt, जन टू प्रोड्यूस, तो जहां पर सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और ये सारे डायटोमिक है, वो क्या है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. These all are the halogens and these elements they are in three states, solid, liquid and gaseous state. So here you will see that is the fluorine and chlorine, they are gaseous in state and they are highly reactive and they are toxic gases, they are highly toxic gases. जबकि ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है at this present and then it changes, and then the iodine is in the solid state. So these three properties they shows, that's why it gives that is the gradation in the halogen family. Not only this, but you will see that the fluorine it react with the glass and it in the presence of amount of water, और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि इनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं हेलोजन फैमिली. सो दिस इज व्हाट द ग्रेडेशन ऑब्जर्व्ड इन द 17th group, that is the halogen family, and these 7 elements are nothing but the halogen. So this shows how the metals and non-metals are proved. With the help of this, the classification of elements, we have completed here the second lesson of class 10. I hope you liked all these sessions. Still, if you are having any queries, please comment me on my comment box and like it. Next time हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ. I hope you enjoyed this second lesson. Thank you. Jai Hind.